Two confusing things: profession and passion. Hi everyone, welcome to my channel. I am Sakshi and this is my first video. And today I want to share about my art journey with you. 6 से 7 साल से आर्ट कर रही हूँ. ड्राइंग और कलर्स हमेशा मेरे लाइफ का पार्ट रहे. 10th के बाद आई रियली वांटेड टू चूज़ आर्ट एज माई करियर, बट अराउंड में सबको लगता था कि आर्ट इज़ जस्ट अ हॉबी एंड देयर इज़ नो स्टेबल करियर इन इट. So I chose science and later I got admission in homeopathic medical college. फ्रेशर होने की वजह से मैं रिपीट नहीं करना चाहती थी और आर्ट छोड़ना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं था. That's when I started taking art orders while managing medical college side by side. Honestly, it was not easy at all for me. Sometimes मेडिकल स्टडीज़ पे फोकस नहीं हो पाता था और कभी कभी मैं बिल्कुल अनहैप्पी फील करती थी. There were some moments where I thought quitting of medical college because I was so stressed, so sad, and I was not happy at all. And somehow I managed, and today I am third year homeopathic students also practicing as an observer. इस पूरे जर्नी में एक चीज़ कांस्टेंट रही है और जो कि है आर्ट. आई वॉन्ट टू टेल एवरी आर्टिस्ट हु फील्स कि उन्हें उनका करियर एज अ आर्ट चूज़ करने का मौका नहीं मिला. Please don't stop what makes you happy. You can follow your passion along with your profession also. Art मेरी invisible medicine है. Whenever I am sad, I do art. Whenever I am happy, I do art. Art never left me. In fact, it always chose me. जर्नी मेरे लिए बहुत difficult रही है because I always wanted to work as a full-time artist. If in future everything goes right, I will always love to work as a full-time artist. Thank you so much for watching this video till the end. Please do subscribe my YouTube channel. This is my Instagram handle. Please also do follow there.